की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे नहीं लगा था मैं इतना जल्दी दूसरा वीडियो लेके आ जाऊंगी। इट जस्ट हैपेंड। सो भी देखो, दिस इज जस्ट सैड। ये मेरी कौन सी हंसी है मुझे नहीं पता। मैं रो रही हूँ, हंस रही हूँ, और एम आई स्ट्रेस, आई डोंट नो। तुम देखो गद्दार नजर वो आए। This joke of comedian Kunal Kamra sparked major backlash, with an FIR filed against him and the venue being vandalized. Kamra called Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde a traitor for leading the rebellion that toppled Uddhav Thackeray's government and split the Shiv Sena in 2022. जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। Shiv Sena party workers vandalized the habitat where the comedian's video was filmed. The venue has since temporarily shut down. Shiv Sena MLA Murji Patel filed an FIR against Kamra and demanded an apology from him within 2 days. The incident was criticized even by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। While the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression, the government can impose reasonable restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offence. At the end of his show, Kamra held up a copy of the Constitution and said, This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. This is not joke. Constitution of India is a joke. Nobody's follow. It just like India में कोई rule follow ही नहीं करता है. Nobody follows the. Okay. It just for the people who doesn't have power, उनको follow करना पड़ता है because they can't do anything about it. Because the power there follow rules, they uphold you and उनको जो मर्जी होती है वो वही करते हैं. That's it. Not the first time the comedian has courted trouble for his humor. In 2024, Kamra made jokes about Salman Khan. Despite reports of a possible defamation suit, the comedian stood his ground and refused to apologize. सलमान खान के ऊपर जोक नहीं मारने का, वो लड़कियां को लाफे मार रहा है। In 2022, his Gurugram show was cancelled following threats from the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal. At the time, Kamra wrote an open letter challenging the VHP to condemn Nathuram Godse to prove their pro-Hindu and anti-terrorism stance. In 2020, Kamra shared an edited video of a 7-year-old boy singing for PM Narendra Modi in Germany, replacing the song with Mehengai Dayan from Peeply Life. The boy's father objected to his son being used in a political context, and the country's child rights body sought action. Kamra later deleted the clip, clarifying he hadn't intended to target the child. In 2020, Kamra confronted Arnab Goswami mid-flight, questioning his style of journalism. Following the incident, Indigo banned him for 6 months with other airlines, including Air India, SpiceJet, and Go Air. Oh my Following God, I didn't know about that. कि इतना Kamra पे बैन कर दिया सारे एयरलाइन में. suit. Instances of venues being threatened over a performer's content have become increasingly common in India. In the past, venues faced vandalism threats and pressure to cancel shows of comedians, including Munawar Farooqi and Veer Das. So, you must have heard the news
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ओनली फॉर सर्टन पीपल एंड नॉट फॉर एवरी. ही said whatever he said, ठीक है, but the people who did all this, उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है. They can do anything they want. They have the freedom to go and tore for doing anything. ठीक है. This is just, I mean, अगर कुणाल तो डायरेक्ट बोला भी नहीं. कुणाल कामरा has not said anything directly. अगर नाम लेके बोलता तो क्या ही हो जाता है. He said it in a joke. He said it in a song where he didn't even take anybody names. And he got that. I feel like he need our support क्योंकि जो चीज़ हमको ज़रूरत है हमारे डे मेरे संग को हमको चाहिए कि डोंट वांट potholes in Mumbai's road. उसके वो नहीं चाहिए हमें अच्छी एयर चाहिए, हमको अच्छा रोड चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड है जो नेसेसिटी है एंड जिसका पावर उनके हाथों में है जिसके ऊपर आप जोक कर. ठीक है. So somebody has to take a stand for us ना, and the Kunal Kama is doing that. And if आज आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो आई डोंट नो ही जिन गॉना बी. एंड मेरे को एक ही चीज समझ नहीं आ रही कि सारे पॉलिटिशियंस एंड whoever लाइक जो भी इस मॉब है वो सारा दिन बैठ के कॉमेडी देखते रहते हैं क्या? उन लोग को और कुछ काम नहीं है. दे ओनली वॉच कॉमेडी और व्हाट? Seriously. In the end, he may even show the constitution of Kriya book at joke है वो joke भी लिटिल लाइक उसका कुछ नहीं है, कुछ माइनिंग नहीं है उसका, ऐसा लग रहा है. The way these things are happening, just the habitat is not involved in the making of the recent video of Penardana. It did not wants the views. It was by the species season, not the यार ये हैबिटेट ही फंस जाता है एक चीज में बेचारा. लाइक अभी तो समय राना का खत्म हो रहा था, लाइक वो भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, जस्ट डाइंग डाउन लिटिल बिट एंड अगेन दिस हैपेंड. इट जस्ट नॉट गुड फॉर हैबिटेट. एंड मुझे समझ में आ रहा है कि वाई दे अपोलोजाइज, बिकॉज यार कितने लोगों का काम है वो. ठीक है, ऑलरेडी हैबिटेट पे कितने लोगों की आंख गड़ी हुई है. एंड अगेन दिस ऐप है. हैबिटेट को कुछ तो करना पड़ेगा भाई, उनसे पैसे आते, बिजनेस हो उनका. तो आई डोंट थिंक सो कि we should be like this कि why you're like I've seen the comments everyone saying why you're apologizing, but मुझे लगा they are also kind of scared कि क्योंकि कितने लोग वहाँ पे काम करते होंगे यार. जस्ट इमेजिन द पीपल वर्किंग, द साउंड मैन, द लाइट मैन, द पीपल, द सिक्योरिटी, द फूड एंड जो भी देखता होगा, क्लीनिंग मैन जो भी होगा, वो सारे वहाँ पे तो काम करे. उनका तो गया ना, उनके जॉब्स का क्या? विल द पीपल इन पावर विल गिव देम अ जॉब? और जो भी उन्होंने वहाँ हैबिटेट में किया है दैट इज स्ट्रेट अप इनलीगल एंड क्राइम है वो. उसके ऊपर कोई कुछ बोलने वाला है? उसके ऊपर द पीपल इन पावर विल डू एनीथिंग अबाउट इट? है? I don't think so because they have the freedom of doing that, but we don't have freedom of saying anything. If you say against these people, oh my God, you are in G. ये होना ही है. I'll not apologize. I don't fear this more. This is the Bunal. Okay, this is what he's trying to do and make a change in this country because nobody is doing that. At least he is doing that, and people is like literally not letting him. मुझे लगता है कि this is इसने बोला, इसने कॉमेडी की, इसने बोला this is his job, this is the thing is doing and you cannot make everyone shut up. Okay, तुम सबके मुंह पे मुंह लगा सकते हो ताले. And this is straight up right, and I feel like he should also be obviously he should not apologize. इसने उसको गलत ये बोला, इसने किसी ने नाम ले लिया, is legally correct and have freedom of speech of saying anything. I feel like we should not scare upset anyone.
That's it. So we as a creator, I feel like we need to speak out. Every creator I feel like needs to speak out अभी, वरना हमको हमारा जो freedom है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा. Because I don't feel like these people are gonna stop unless we are gonna speak out for them. मुझे लगता है अभी सबको ही बोलना चाहिए, otherwise you know what's happening these days. किसी को भी बोलने नहीं देंगे, किसी को कंटेंट बनाने देंगे. Nobody will have the rights to speak out because it's just these people with power. It's their one, okay, and we are living it. तो मैं इतना ही बोल रही हूँ कि अभी बोलो, अभी नहीं बोलोगे तो फिर आगे जाके तुम्हारे साथ भी यही होगा and nobody will speak out for you. So do whatever you want to do and just don't say anything on the internet if you don't mean. If you mean it, speak it and don't apologize. That's it. Bye. ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी नहीं बोल सकती थी। हालेलुया यीशु